हेलो गाइस। कैसे हो दोस्तों? माफ़ करना, बहुत टाइम बाद फिर से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि काम अभी स्टार्ट हुआ। फ़िलहाल तो रमज़ान का महीना है, इसलिए वीडियो बहुत कम अपलोड हो रहे हैं। हेलो गाइस, sorry for not uploading for a long time because it's fasting time, Ramadan. We can't upload much of a video. Plus, we do not have much people we do not have anybody who can record it for us. And especially, we do work at night, so due to the light issues, we cannot record more videos at night. So we had a little bit of a trouble on this ship because he was a bit of a troublemaker. दोस्तों, ये मेंढा जो था बहुत ट्रबल कर रहा था क्योंकि थोड़ा नोटोरियस था वो। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से हम उसके बाल उतार रहे थे, तो उसको पसंद नहीं आया उसको। वैसे अगली बार जब उसके बाल काटेंगे तो लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा। उसको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उसको पता नहीं है क्योंकि ये पहली बार था। So this ship will get used to the trimming next time because he's not used to what we are doing with him right now. And we had his brother, we did it before him, so he was not a troublemaker at all. But this guy was a little bit notorious because he was big, and not that big though. But his brother was a little bit smaller than him, so he was not a problem. But this guy, he was notorious. He was also getting a bit of a nick sometimes, but not much, just a little slight of a scratches sometimes do happen. And due to he was troubling a lot, so machine was also a little bit of getting heated, and his skin. Usually with this trimmer, we do get face those problem because I usually trim it very close to the skin, because here in India we do not have much use of this leyland that we have, that comes off this ship. But some people, they do use it to make pillows. We do not use any leyland to make any wool or something like that, so they usually throw it away. So we do not have much use of his hair. So we continued on a second cuts also, but making sure everything gets perfect, trimmed. As you can see, he was a trouble, this guy. He was a bit of a trouble. He was not giving me any room to move properly, smoothly. I usually move very smoothly on these animals, but sometimes the notorious animals do give me a bit of a problem. Making a line up on top of the hoops, so that because sometimes on top of the hooves, they on those hair there's a lot of mud sometimes because mud, urine, all those unnecessary mud which machine doesn't like to be on it, because if it mud or sand gets it, it actually usually affects the edges of the blade, and it loses its edge in the middle of the way and it stops trimming. So here we go under his legs, next to the testicles, next to the pistol, making sure everything is safe on there. He doesn't get any nicks, making sure, wait, there it is. This guy was a trouble, I tell you. Honestly, इसने इतना परेशान किया है भाई, ट्रिमिंग के टाइम पे इतना परेशान किया है, 2 आदमियों को बुलाना पड़ा मेरे को। आप देख लेना, अभी पहले तो कुछ नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा बहुत सीधा हो जाएगा, लेकिन जैसे हम गर्दन पे आएंगे ना, वो बहुत ट्रबल कर रहा था। तो फिर मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, भाई आजा, इसको पकड़, वरना इसको लग जाएगी या फिर ये मशीन ख़राब कर देगा। मुझे थोड़ी ताकत अप्लाई करनी पड़ी। लोग समझते हैं यार मैं थोड़ा गुस्से वाला हूँ, थोड़ा ज़बरदस्ती करता हूँ जानवर के साथ। एक्चुअली ज़बरदस्ती इसलिए करता हूँ कि उसको लग ना जाए, सीधा इसलिए खींचता हूँ कि उसकी चमड़ी ब्लेड के अंदर फंस ना जाए। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो जानवर को लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि जानवर को किसी भी जगह से उसको स्क्रैच पड़े या फिर उसको कुछ जगह पे लग जाए। Well, I have my own way of trimming these animals here. Well, I'm not, what can I say? I haven't mastered the trimming of the ship, but I'm trying to avoid making sure that he doesn't give me a bit of a he doesn't give me a trouble. And ship do give me a trouble, especially when you are trimming his legs, especially on the front ones. The rear, it's not a rear legs are not a problem, but the front are always a problem. And these guys are very notorious. Not this ship. Usually, mostly all the ships, when you trim their legs,
They are a bit of a troublemaker. See, call one guy. I'll tell him, please come here. This guy is a bit of a troublemaker. There is a call, and here's the guy who will come just right now. And I'm telling you, this guy was so much troublemaker that trimming his head. That's where the problem was. So I had to hold him so harshly so that he doesn't get any scratches on his ears. But he did get a bit of ear scratches because of his own mistake and his own fight. He was actually fighting with me. He wasn't allowing me to trim him properly. He was not happy with what I was doing with him. Well, that some sheep do have a bit of a troubles. They are a bit of a troublemaker. Usually sheep are not a problem when trimming, but in front legs or rear legs, from the knee downwards, that's where the problem is. Upwards is not a problem, but downside he gives me a bit of a hassle. There it is. He's gonna take his legs out of my hands. Mostly he was giving me a lot of trouble. But I had to fight him. What can I do? There is no choice. He is just an animal. He doesn't know that I'm helping him. Some people, they have also told me that no, you are too harsh. I don't want to trim by you because you put down the animals. I told them it's okay. If you don't like my way of trimming, it's okay. I have no choice. I mean, it's your choice if you like the way I do it. But 90% of my clients, 90% मेरे जो क्लाइंट हैं सब लोग मुझे कहते हैं नहीं भाई तेरे जैसी ट्रिमिंग फिनिशिंग नहीं आती है दूसरे काम करने वालों से तुम्हारी फिनिशिंग अच्छी रहती है इसलिए हमको तुम्हारा काम पसंद है आप ही आना और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार मुझे तुम्हारी स्टाइल पसंद नहीं है ठीक है भाई जैसे आपकी मर्ज़ी मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आप मुझी से मुझे बुला के आपके जानवर के बाल कटवाएं ये उसके आधे से ख़त्म हो गई. We have finished half of him. Now on the other side. Now this is where the trouble starts. That's where the trouble starts. I was trying to make sure that I go very smoothly on this animal. Well, it took me 15 minutes to clean him. It usually takes me 10 minutes. But I don't have a shearer, like I said. Likewise, I told you I have a trimmer. But this machine does the perfect job. I told you that here in India we do not have much use of a linen, so we use the trimmer, especially this one. It does a good job. For me, it's alright because if I use a shearer, it happens that I might nick them. भाई वो जो इम्पोर्ट मशीन आती है वो थोड़ी मैं चला नहीं पा रहा हूँ चला सकता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन क्या होता है कि वो बाल जो है इतनी बारीकी से नहीं काट पाता काट तो सकता है लेकिन अपने यहाँ पे क्या है भाई जानवर के बाल पूरी तरह से स्किन टच निकल जाए बाल पूरे रहने ही नहीं चाहिए उसके ऊपर तो गर्मियों की वजह से क्योंकि यहाँ गुजरात में भी थोड़ी ज़्यादा हर जगह इंडिया में गर्मी रहती है 40 plus temperature here we have in India 40 plus 42 45 now recently the summer have started even the temperature recently going about 41 degrees so here in India we have saying that if you trim the animal from the skin right from the skin it's much better for them so that they don't get any hair remain or ticks that are inside sometimes the parasites do give them a bit of a trouble here also especially the ticks so in ships we do find ticks so that's not a new case especially where they are having the buffalo especially in the barn and it's much of a urination the animals do leave their urine and their droppings in other words poop so I make sure that I avoid those things here by the ticks are always there on a dirty places you will find some parasites always some people they don't have time to clean some people they do use some I don't know some treatment to remove that pest control thing so well we do face ticks sometimes but like this one here we didn't have any ticks but the sheep was a troublemaker
तो ऐसा इतना परेशान किया था। तो यहाँ पे अब अपने इंडिया में सब लोग जानते हैं कि हमारा टेम्परेचर 45 के ऊपर भी जाता है। तो लोग पसंद करते हैं कि भाई चमड़ी से बिल्कुल स्किन टच, जैसे चमड़ी के ऊपर से ही पूरा उखाड़ लो उसको, थोड़े ऊपर रहने ही मत दो, पूरा निकालो उसको। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेंढे को लग जाता है, और वो जो इम्पोर्ट मशीन आता है वो आराम से लग जाता है, बहुत इजी नहीं, उससे काटना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हो कि भाई चलो ठीक है ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, तब फिर वो मशीन में चला सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि जो स्किन टच, जैसे कि हमारे यहाँ पे फिनिशिंग ज़्यादा मैटर रखता है, तो उसके लिए वो मशीन चलाना मुश्किल रहता है, उसमें फिनिशिंग नहीं आता। और ये जो मशीन है वो फिनिशिंग के साथ काम करता है। लेकिन इसमें भी अगर आपने ठीक से उसको जानवर को पकड़ा नहीं तो वो भी लग सकता है। हालाँकि मेरी स्टाइल जो काटने की यही है। कुछ लोग मुझे बोलते भी है कि भाई इस्माइल भाई नहीं यार आपकी स्टाइल मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है भाई, नहीं पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिनिशिंग के अंदर जितना भी हो सके मैं इतने अच्छे से कोशिश करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी फिनिशिंग सबसे अच्छी है। यहाँ पे दूसरे और लोग भी काटते हैं बाल, लेकिन वो लोग ज़्यादातर मेंढे के बाल को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो काट नहीं पाते, उनको प्रैक्टिस नहीं है उतनी। स्पेशली हमारे भरूच के एरिया में उन लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है। गुजरात के बाहर बहुत सारे मुझसे भी बेहतर ट्रिमिंग करने वाले लोग बचे हैं भाई, ऐसा नहीं है। मैं कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जानवर के बाल अच्छे से काट दूँ, ताकि उसको गर्मी के मौसम में उसको ट्रबल ना हो, और उसको कहीं पे जैसे कुछ बाल रह ना जाए तो बच्चा जो है बुरा लगे, जानवर ख़राब दिखे। मैं कोशिश करता हूँ कि जानवर अच्छा दिखे। ज़्यादातर जानवर जब बाल ट्रिमिंग हो जाती है उसके हफ्ते के बाद आपको उसकी फिनिशिंग आपको मालूम पड़ जाएगी, नहीं भाई इसने ट्रिमिंग सही की है। खास करके शिप के बाल जो है वो हफ्ते के बाद ही आपको पता चलता है कि नहीं भाई इसने ट्रिमिंग सही की है। तो मैं ऐसे लोगों को अभी, जैसे कि मेरे एक दोस्त है उन्होंने फ़ोन किया था कि इसमें भाई आपने मेरे 60 बकरे काटने हैं, तो मैंने फ़ोन किया उनको, बोला नहीं भाई इस्माइल भाई आप मत करो, मेरे पापा ने बोला आप तो ऐसे सुला के करते हो और हम बहुत प्यार से पालते हैं जानवर को। मैंने बोला भाई ठीक है, आपसे प्यार से पालते हो, मैं भी प्यार से ही काम करता हूँ उनके साथ। मैं इसलिए ज़बरदस्ती से पकड़ना पड़ता है कि ताकि उसको लग ना जाए, क्योंकि मेरा मशीन जो है थोड़ा फास्ट रहता है। और दूसरे हमारे गुजरात के अंदर जो भरूच एरिया में जो दूसरे बंदे जो है काम करते हैं, वो छोटे मशीन से काम करते हैं, तो वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। और ये मशीन जो है 1.5 किलो का वज़न रहता है, किलो 1.5 किलो का वज़न रहता है, तो हर बार उसको अगर जानवर खड़े रख के काम करेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगता है, क्योंकि 1.5 किलो का मशीन हर बार आप टांग से लेकर ऊपर खड़े खड़े करोगे तो उठाना पड़ता है, तो उठाते उठाते ही आप थक जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आपको पसंद नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोई और बंदा आया था तो करो आप। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अगर आप खड़े खड़े वो करते हो तो कर दो। मैं बोला नहीं कर सकता भाई, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, और मेरे हाथ की मुझे वैसे भी टेंशन है। मैं इतनी तकलीफ़ झेलना नहीं चाहता। आपके जितने भी बकरे हो, आप तो 60 बकरे की बात कर रहे हो, 60 बकरे काटते काटते तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। पूरे दिन के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 बकरे काट सकता हूँ। अगर मेरी स्टाइल से मैं करूँगा तो 50 भी उड़ा दूंगा एक दिन में। He was a trouble. Look at him. He's always troubling. So I had to hold him. ये बहुत मुश्किल कर रहा था भाई। उसके सर के ऊपर जितना मुझे टाइम लगा है ना, उसका उतने पूरे बदन में उतना टाइम लगेगा जितना मेरे उसके सर के ऊपर टाइम लगा। This guy was so much trouble that it didn't take me so much time to finish the entire body. That it took me so much time to finish his head. It took me 3 minutes to finish his head. And the whole body finish. It took me, let's say, maximum about 10 minutes. But his head took me 3 minutes. That's what stops me. Like if this kind of a trouble are happening while we're working, and if the animal gets cut, and these people are saying, please don't lie them down, trim them while they're standing. It's impossible, brother. If this kind of a troublemakers are with you all the time, that means I am done. I don't have much job to do. I can't have enough time for you guys, because I have other clients are also waiting for me next door or maybe next village. सो गाइस, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और वो रास्ता नहीं है, और मुझे अच्छे से जो फिनिशिंग मेरी आती है इसी स्टाइल से आती है।
फिनिशिंग में बहुत फ़र्क रहता है। धीरे धीरे काम करने में क्या है भाई कि मेरे पास बहुत काम रहता है, तो इतना वक्त मैं नहीं निकाल पाता हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। आई वुड लव टू हैव सम comments from you guys, and I'll appreciate your ideas. Even if my work, if you don't like it, you can comment. If you like my work, you can also comment. So if I'll be taking any points as a positive point. Thank you very much. Have a lovely, wonderful Ramadan and a lovely day. Thank you very much.